Jai Swaminarayan friend. Today we are going to learn chapter number 16 of Social Science in Standard 10. The chapter name is here given Economic Liberalization and Globalization. In the earlier chapter we have learned about economy as well as we have also learned about economic development. In this chapter we will learn about economic liberalization and globalization. Unit number 16, Economic Liberalization and Globalization. So friend, we will see here first paragraph. When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. It took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5-year plans one after the other. So after independence, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development, and that's why our government has been started implementing to 5-year plans one after the other. यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने 1947 के बाद जो स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमारी कंट्री में हर एक 5 साल की एक जो प्लान है तो वो इम्प्लीमेंट की जाती है. मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस्ड फॉर दिस. टू अचीव स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आवर गवर्नमेंट have been announced these three policy: monetary policy, fiscal policy and industrial policy. Although many of these plans were completed, success was not attained in achieving economic development in true sense. However, after completing of this plan, we have not get a proper success in economic development. Hereby, government investigated the causes for failures and determined to give new form to different economic policies in order to rectify the errors done in the past. यानी कि ये जो प्लान है उसमें प्रॉपर सक्सेस न मिलने के कारण गवर्नमेंट ने उनके पीछे जो फेल होने के रीज़न है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद कुछ नई जो पॉलिसी है तो उसको डिटरमाइन किया, यानी कि नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया कि जिसके कारण जो पास्ट में जो भी एरर्स हुई थी तो उसका कुछ सॉल्यूशन हो सके. इन दैट रिगार्ड, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, such economic reforms were implemented which could strengthen economic development, which are known as liberalization, privatization and globalization. To improve the errors which is done in the past, our country has been introduced industrial policy in 1991. और उसके बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में हुए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें कुछ 3 जो है तो वो रिफॉर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं. उसमें फर्स्ट नंबर है लिबरलाइजेशन, सेकंड नंबर जो है तो प्राइवेटाइजेशन और तीसरा नंबर जो है तो वो ग्लोबलाइजेशन. यानी कि ये 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी उसके कारण जो 3 नई पॉलिसी हमारी कंट्री में आई थी तो वो यहाँ पे आपको दी गई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. हियर वी विल सी फर्स्ट नंबर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. Government gradually reduces the restrictions and controls imposed on private sector and encourage economic development. So after this policy, government started to reduce the restrictions and controls which imposed on private sector. As well, they have also encouraged
economic development. This is known as economic liberalization. Main economic reforms related to liberalization which were made in the earlier period were as follows. So main economic reforms related to liberalization which are given below. First number, there was reservation for 18 industries. For the industries other than them, compulsion to take government permission was eliminated. यानी कि उस वक्त 18 इंडस्ट्रीज ऐसी थी कि जिसको रिजर्वेशन रखा था और बाकी की सभी जो इंडस्ट्री है तो उसके लिए जो परमिशन लेने की जो रूल्स थे तो उसको गवर्नमेंट ने हटा दिए थे यानी कि उसको रिड्यूस कर दिए थे। सेकंड नंबर, एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। यानी कि रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस अलावा के सिवा जो भी एरियाज है जो भी फील्ड है तो उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया था। यानी कि उसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी उसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे सकती है। थर्ड नंबर, ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वॉज कैंसल्ड। यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की जो एक ट्रेडिशन हमारी कंट्री में थी तो उसको भी कैंसिल कर दिया गया था। फोर्थ नंबर, प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज which do not cause pollution and are not hazardous for environment was cancelled. Those industries which are not spread pollution and which are not hazardous for environment. So these companies or industries may not take permission. यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज है कि जिसके कारण पॉल्यूशन जो है वो स्प्रेड नहीं होता है या एनवायरनमेंट के लिए नुकसानकारक नहीं है तो ऐसी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की परमिशन लेने से जो रिस्ट्रिक्शन था तो वो उसको हटा दिया गया है। Now friend, we will see here advantages of liberalization and disadvantages of liberalization. So first of all, we will see here advantages of liberalization. Here given first advantage, as a result of liberalization, private sector has got an opportunity to make unconstrained development which led to increase in production। यानी कि लिबरलाइजेशन के कारण एक पॉजिटिव रिजल्ट ये मिला कि हर एक प्राइवेट सेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जिनके कारण जो उनका प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन में उनको कुछ बढ़ावा मिल सके। सेकंड एडवांटेज, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, global trade started getting an impetus and there has been increase in global trade। यानी कि लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करने के कारण जो ग्लोबल ट्रेड है तो वो स्टार्ट हो सका और साथ में उनको एक इम्पेटस मिला यानी कि एक स्पीडअप उनको मिला और साथ में एक ग्लोबल ट्रेड जो है तो उसमें भी कुछ इंक्रीज जो है तो वो हम देख सकते हैं। थर्ड एडवांटेज, because of the increase in foreign trade, there has been increase in reserve of foreign exchange। यानी कि फॉरेन ट्रेड में इंक्रीज होने के कारण हमारी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है तो उसका जो रिजर्वेशन है तो वो भी बढ़ गया है। फोर्थ नंबर, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। यानी कि हमारी कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, फैसिलिटी जो थी उनकी तो वो भी लिबरलाइजेशन के कारण बढ़ी हुई है। Now friend, we will see here disadvantages of liberalization. First number, in spite of decrease in restrictions, monopoly could not be checked। यानी कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे तो वो रिस्ट्रिक्शंस को डिक्रीज हो गए, उसको रिड्यूस कर दिए गए
फिर भी उसमें जो मोनोपोली होती है तो उसको चेक नहीं किया जाता है। सेकंड नंबर, एज फोकस हैज ओनली बीन पेड on industrial sector, India has remained backward in development in agriculture field। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के कारण इंडिया की जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसका जो डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए उसमें नहीं हो सका है। यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड को अच्छी तरह से कुछ डेवलपमेंट नहीं मिल सका है। थर्ड नंबर, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन डिस्पेरिटी ऑफ इनकम। यानी कि इनकम की जो डिस्पेरिटी है तो वो बढ़ गई है, उसमें इंक्रीज हुआ है। फोर्थ नंबर, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, फॉरेन डेब्ट हैज़ इंक्रीज्ड। यानी कि लिबरलाइजेशन के कारण जो इम्पोर्ट्स था तो वो इंक्रीज हो गया है और जो एक्सपोर्ट था तो वो डिक्रीज हो गया है। तो उसका परिणाम ये मिला कि जो फॉरेन डेब्ट है तो वो इंक्रीज हो गया है। Now friend, we will see here privatization. Privatization means the process in which ownership and management of industrial units under state control is handed over or transferred to the private sector is called privatization. So friend, privatization is the process in which the ownership and management of industrial units which are under the state control is handed over or transferred to the private sector. It's called privatization। यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन है तो वो एक प्रोसेस है जिसमें जो भी ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो इंडस्ट्रियल यूनिट का स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है तो उनको कोई प्राइवेट पर्सन के या प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर किया जाता है कि जिसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। So friend, here given method of privatization. So first method is here given. Firstly, those areas which are reserved for public sector are open for the private sector। यानी कि जो फर्स्ट मेथड है उसमें ये लिखा गया है कि जो भी पब्लिक सेक्टर के लिए जो एरियाज को रिजर्व किया गया है तो उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जाए। और सेकंड मेथड जो है, स्टेट कीप्स द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड कंपनीज अंडर इट्स कंट्रोल and gives the charge of management to the private companies, or state keeps management in its own hand and gives ownership to the private company। यानी कि जो भी इंडस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट की ऑनरशिप की है तो उसको जो भी प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनीज है, तो उसको मैनेजमेंट करने का जो चार्ज है तो उनको दे दे, या फिर जो भी मैनेजमेंट है तो उसको कोई प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनी करे और उसकी जो प्राइवेट कंपनी जो है तो उसकी जो ऑनरशिप है तो वो खुद के पास रखे। Now friend, we will see here advantages of privatization and disadvantages of privatization। So first of all, we will see here advantages of privatization। So first number, there is increase in number of production units in industrial sector। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रोडक्शन यूनिट्स है तो उसकी जो संख्या है तो वो इंक्रीज हो पाई है। Second number, production has been increased in capital intensive and consumable commodities due to privatization। यानी कि प्राइवेटाइजेशन के कारण जो कैपिटल इंटेंसिव है तो वो उसमें इंक्रीज हो पाया है और साथ में जो भी कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ है तो उसमें उसका प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हो सका है। थर्ड नंबर, working capacity of public sector has improved due to privatization of public sector enterprise। So that means friends, due to privatization, the working capacity of public sector has improved due to public sector। Now friend, we will see here disadvantages of privatization। So first number, economic power
has centralized as a result of privatization, because of which evil of monopoly has increased. Due to privatization, the economic power become more important, and that's why the monopoly has increased in our market. यानी कि प्राइवेटाइजेशन के कारण जो इकोनॉमिक पावर का जो इम्पोर्टेंट है तो वो बढ़ गया, और साथ में जो मोनोपोली है तो वो भी मार्केट में ज़्यादा बढ़ी गई। सेकंड नंबर, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, ओनली large industries have been benefited. So, due to privatization, cottage industries have not been developed in proper way, whereas large-scale industries have been getting maximum benefit from this privatization. Third number, prices have not remained under control due to privatization. This has led to problem of price rise. Due to privatization, the prices have not remained under control of the government, and that's why the problem of price rise is increased in the market. So friend, these are given here advantages of privatization and disadvantages of privatization. Now friend, we will see here globalization. Globalization is the process of connecting one country economy with the world economy, as a result of which flow of goods, services, technology and labor is easily available in the world. So friend, globalization is the process in which one country's economy is connect with world economy, and as a result of that, goods, services, technology, and labors are easily available in the world. Following improvements have taken place due to globalization. So, first number, obstacles of trade between two nations have been removed. That means, friends, between two nations which are obstacles for trading activity have been removed now due to globalization. यानी कि दो कंट्री के बीच में जो व्यापार करने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स खड़े होते थे तो वो ग्लोबलाइजेशन के कारण दूर हो चुके हैं। सेकंड नंबर, सच अ कंडीशन हैज़ बीन क्रिएट सो दैट कैपिटल एक्सचेंज कैन easily take place between two nations. Globalization provides such a type of platform where capital exchange can become easily between two countries or nations. Third number, obstacles in the way of exchange of technology have been removed. That means friends, obstacles which are become problematic for exchanging of technology, so all these obstacles have been removed due to globalization. यानी कि टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने में जो भी ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम्स खड़े करते थे तो वो अभी रिमूव हो चुके हैं। फोर नंबर, फ्री exchange of labor may be there among different nations of the world. Due to globalization, the exchange of the labors become free among different nations of the world. यानी कि दुनिया के जो देश है तो उनके बीच में जो लेबर्स की जो एक्सचेंज होती है तो वो अभी फ्री हो गई है। सो फ्रेंड, वी हैव सीन हियर improvements which have been taken place due to globalization. Now friend, we will see here effects of globalization. Mixed effects of globalization have been there on Indian economy. Many advantages and disadvantages are there, which are as follows. Indian economy has been felt mixed effects due to globalization. There are given advantages and disadvantages of globalization, which is given below. So, first of all, we will learn here about advantages of globalization. So, first advantage is here given.
Foreign direct investment means FDI is encouraged due to globalization. Due to globalization, foreign direct investment means FDI is encouraged. That means friends, due to globalization, many different countries of the world are coming in our country to establish their plant, and in this way they are investing in our country. Second advantage, goods produced in the developed countries can easily be obtained due to globalization. Which goods and commodities are produced in the developed countries? All these things can be easily available in our country, and it is happened due to globalization. Third number, developing countries like India can withstand competition at international level due to globalization. यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि हमारी हमारी कंट्री इंडिया, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपटीशन होती है ट्रेडिंग एक्टिविटी की, तो उसमें टिके रहने के लिए उनको जो ताकत है, उनको जो शक्ति है, वो ग्लोबलाइजेशन के कारण मिलती है. So friend, we have seen here advantages of globalization. Now friend, we will see here disadvantages of globalization. First number, expected success has not been attained in finding solution to the problems of poverty and unemployment due to globalization. We are still unable to find the solution of the problem of poverty and unemployment, as well as whatever we have expected success, we have not getting all these things due to globalization. यानी कि पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन की हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी, तो वो अभी तक हमें नहीं मिली है. सेकंड नंबर, डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट एक्वायर्ड proper benefits of increase in exports which they should have acquired. यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको एक्सपोर्ट के जरिए जितना बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, उतना बेनिफिट उनको नहीं मिला है. थर्ड नंबर, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड more benefit while small scale industries have obtained less benefit. यानी कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिला है, जबकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो उनको अभी तक बहुत ही कम बेनिफिट मिला है. सो फ्रेंड, वी हैव सीन हियर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन.